last part of forensic, our 2-year journey. Last এর দিকে এসছি. Forensic psychiatry is almost the end kind of stuff. Forensic psychiatry itself is a huge, psychiatry itself is a topic. मतलब কি বলে subject. हाँ, behave. ठीक है. Obstetric and gynae itself is a subject. So there are role of forensic medicine into it. So we will touch the disease. কিছু কিছু important part আছে যেটা তোমাদের জানতেই হবে। আর apart from that, বাকি তোরা psychiatry পড়ছিস তো? কবে? Next year. Okay, so you will read next year. Okay, we will touch upon something. We will not go deep. I'm psychiatrist नहीं. ठीक है. So don't hold me to that. Now forensic psychiatry. So what is psychiatry? मोटा मोटा क्या होता है? Deals with etiology, clinical presentation, diagnosis and management of diseases of mental illness. ठीक है? Now what is forensic psychiatry? Application of knowledge of psychiatry to help in administrator of justice. ठीक है? As a doctor, specifically as a psychiatrist, your specific knowledge when it comes into application for helping in justice, that is called as forensic psychiatry. अच्छा, how many of you want to be a psychiatrist? तुमको सब कुछ बनना है? खाली वही हाथ उठाए, हाँ पीछे. अच्छा, now you want to be something. Okay, very good. चलो अच्छी बात. Good. So forensic psychiatrist there किंतु medical legal system में huge role. Well, not forensic psychiatrist. Psychiatrist there medical legal system is huge role, and you will see why. Okay, now where is psychiatric evaluation by forensic psychiatry required in real life? Suppose in civil cases, cases of testamentary capacity, cases of business contract, dissolution of marriage, validity of consent, capacity of becoming a witness, occupant of property, marriage contract. এই সব জায়গায় psychiatric evaluation লাগে. As for example, property नाम तो सबाई শুনেছিস. अभी आप लोग उतना टेंशन में नहीं हो. I hope you are not. पर आने वाले दिन में होगे. ठीक है? Now, since you have heard the term property, you must have heard the term will. You are not kids anymore. तो इतना तो जानते ही होगे. हाँ भाई. Everyone heard the term will? सुने से तो will. Will की है? किसके पास कितना? है ना? तो now, ये जो will, ये will is null and void until and unless it is verified by a, मतलब the soundedness of mind of the person who is doing that will is verified by a psychiatric doctor. तो will job ही तोरा देख भी, it can be helpful to you or never, might not be helpful to you, but যখনই দেখবি there should be a psychiatric document. Dissolution of marriage, same thing applied. Witness, একটা witness কে ডেকে নিয়ে এলাম. Suppose I am the lawyer, আমি witness কে ডাকলাম. সে witness এসে এদিক ওদিক বলে যাচ্ছে. তো their soundness of mind should also be checked. So that is how, these are the conditions where in civil cases forensic psychiatry can be applied. Now coming to criminal cases. Insanity and crime. We will read কিছুক্ষণ পর. Insanity of trial of case. তো একটা ক্রাইম যদি ক্রিমিনাল ইনসেন হয়, এক এই ট্রায়াল চলাকালীন যে অ্যাকিউজড পারসন যদি ইনসেন হয়, সেকেন্ড তাহলে কি পানিশমেন্ট হবে, থার্ড অ্যাবেটমেন্ট অফ সুইসাইড সেই ক্ষেত্রেও, আর ইনস্যানিটি অফ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট ভিকটিম. This is also a different case scenario. Or for females, this is very important. Why I said females? Because you know POCSO, who will examine the patient? Females. That is why. Okay. Now, so अब insanity की बात कर रहे हैं. So who is a sane person? So who should be a sane person? A person is said to be a sane whose physical and mental activity is accepted by society and
the condition is known as sanity. সব সোসাইটির উপর। যদি সোসাইটি তোমাকে সেন বলে অ্যাকসেপ্ট করে, then you are sane. If they don't accept, so that is questionable. That does not make you insane. ठीक है ना? Now just remember this point. We will discuss at the end of the class. कि legal implication टा की है? So now come to what is insanity. Sane तो पता चल गया, अब insanity. So what I said, if the society accepts you as sane, then you are sane. If the society or some Mr. X does not accept you as sane, then he is trying to say that you are insane. Right? Now the onus on proving, the burden of proving that this person is insane is on the society or on that person or on that court or on that lawyer. ठीक है? আমি যদি বলি মহাপাত্র এখন not sane, I hope you don't take it to heart. तो अगर हमको लगता है कि नहीं महापात्र is doing activities, talking इधर उधर, and he is not his full mental soundedness of mind, so then it is up to me who has to prove. Okay? ऐसे ही नहीं हवा में बात छोड़ दिया, shoot and scoot नहीं चले. Now there is no legal definition. All persons are sane in the eyes of law until and unless proven otherwise. Now what is mota definition kind of insanity? Ba unsoundedness of mind, a disease of the mind that affects the personality, mental status, critical faculties, emotional process and interaction with the social environment. Again, please, while quoting the definitions, go via Reddy, Dr. Reddy. Okay? हालांकि नहीं पूछते इतना insanity का definition, but still, this is one thing that you must. एटा are, so definition of sane or insanity एक बार देखेंगे from Dr. Reddy, not from here, Dr. Reddy. I am not saying it is not from Dr. Reddy, but got it. Okay, now we will go into certain definitions. अच्छा एमन कोनो घटना तो सवार मने घटे छे जेटा तुम भुलाते चाहो, कुछ तो हुआ होगा ऐसा. एज कितना है महापात्रो आपका? 24. तो 24 साल का उम्र में 24, 23, 25 एज में कुछ तो हुआ होगा जो आप याद नहीं रखना चाहते हो. हाँ भाई, जो दुख दर्द वाली कहानी. You have all gone through school life. You are adults above 18. कुछ तो हुआ होगा. हाँ, हुआ. दर्द देख के पता चलता है कुछ तो ऐसा हुआ ही था. So age a painful memory. If suppose this painful memory is brought back to life, what will happen to you? You will feel pain. A painful memory था, याद आया फिर से, दुख तो होगा. समय के साथ सब कुछ भुलाया थोड़ी ना जाता है. ठीक है ना? And that thing psychiatrically is called as abreaction. इतना ही था आपको पेन याद दिलाने के लिए. So this is the definition of what is abreaction. What is affect? Now class में आके आप बैठे हो, मैं आपको forensic psychiatry पढ़ा रहा हूँ at this moment. So the emotion, the mood and the inner feeling of you all at a given moment is the affect. ठीक है? Aphasia, you know what is aphasia? কথা বলতে পারছে না, right? Any disturbance of understanding or expression of language caused by a brain lesion. So this is, acha, you can understand, these all have a neurological background also, specifically aphasia. There are multiple chronic diseases that can cause aphasia, but there can also be a psychiatric, only mental disorder that can also lead to aphasia. Confabulation. Confabulation মানে কি? Unconscious filling of gaps in memory, যেটা পরীক্ষায় হয়, যে ম্যাক্সিমাম লোকে, স্পেসিফিক্যালি যখন সে স্যারের কাছে পরীক্ষা দেবে. ওকে, হ্যাঁ ভাই, সিআর. Unconscious filling of gaps in memory by imaginative experiences or events that have no basis is confabulation. Echopraxia, repeating of the act, সেম অ্যাক্ট বারবার রিপিট করে যাচ্ছে. আমি ধর ক্লাস নিতে এসেছি, এই স্লাইডটাই বারবার পড়ে যাচ্ছি, ভুল গিয়া फिर से यही पढ़ा रहा है, that will become echopraxia. ट्राई करके देखे क्या? ओके, व्हाट इज पैरानोया? এই পরীক্ষা আসছে, প্যারানোয়া, ফিয়ার, রাইট?
সো নাও এরপর আমরা তিনটে জিনিসের সম্বন্ধে জানবো। There are many things here, but we will basically know about three things. তো এখনো অবধি স্যানিটি, ইনস্যানিটি, এই দুটো তোরা দেখবি। ওকে, সেকেন্ড इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशंस। ठीक है, इसका बेसिक डेफिनेशन एंड एन आइडिया इज एनफ। হ্যাঁ, পরীক্ষায় শর্ট নোট এলে একটু ভালো করে লিখতে হবে, দ্যাট ইজ ফর থিওরি পারপাস, বাট প্র্যাকটিক্যাল পারপাস ইলিউশন, ডিলিউশন এন্ড হ্যালুসিনেশন। তো আমি হ্যালুসিনেশন को साइड में रखते हैं, लेट अस टॉक अबाउट डिल्यूजन। सपोज अंधेरा रूम, ওখানে একটা রাস্তা ডান্ডি পড়ে আছে, ওকে, এটা রোপ পড়ে আছে, and if I say that is a snake, what will be this? This is an illusion. কিন্তু ধর গুড মর্নিং, সো ওখানে একটা রোপ পড়ে আছে, ওখানে একটা সাপ পড়ে আছে, আছে? তো এই সাপটাকে যদি আমি বলি যে ওখানে সাপ পড়ে নেই, ওখানে একটা রোপ পড়ে আছে, দেন ইউ উইল সে ওকে ফাইন, ইট ইজ নট আ স্নেক, ইট ইজ আ রোপ। বোঝা গেল কি বলতে চাইছি? ফার্স্টলি আবার আরেকবার রিপিট করি, সাপোজ ইন দ্য ডার্ক কর্নার দেয়ার ইজ আ রোপ অ্যান্ড ইউ এরোনিয়াসলি, নট ফলসলি, ফলস মানে কি? ফলস মানে টোটালি ফলস। সো টার্ম টু বি, বইতে অনেক বইতে ফলস লেখা আছে, অনেক বইতে এরোনিয়াস লেখা আছে, বেটার টু ইউজ এরোনিয়াস টার্ম so that we don't write it negate completely, because there is something that is a stimuli, that is a rope. অন্ধকার রুমে একটা দড়ি পড়ে আছে, তোমার দড়িটাকে দেখে মনে হলো সাপ পড়ে আছে, সো দিস ইজ অ্যান ইলিউশন। তার মানে কি? একটা রিয়েলি একটা স্টিমুলাই ছিল, which you erroneously মানে wrongfully interpreted করলে as a snake, so that is an illusion. But once you are corrected कि नहीं वो सांप नहीं, वो रस्सी है, दौड़ी, then yes okay fine, it is not a snake, it is a दौड़ी। ठीक है, so let us see false or erroneous। যদি বইতে false থাকে তাহলে please use the term erroneous, okay, bracket में भी लिख सकते हो, but better to use the term erroneous। Erroneous interpretation of an object or stimulus which has a real existence। Falsity can be removed from the mind after proper explanation and careful demonstration of the process। Now, what is delusion? Delusion এর ক্ষেত্রে there won't be any stimuli, but there won't be any object। আর যদি ক্লিয়ার করা হয় তোমার মাথা থেকে ওটা যাবে না। So this is the difference between illusion and delusion। আমাদের জন্য, পরীক্ষার জন্য this is very important। So what is delusion? It is the false, persistent belief without appropriate external stimuli in something which is not a fact and which persists even after its falsity has been proven। Clear? Questions any? Okay, তাহলে চারটে ডেফিনেশন আপাতত: sanity, insanity, illusion and delusion। Very very important for internal বা prof। Now let us go into types of delusion। এটা মাঝে মাঝে এমসিকিউতে জিজ্ঞেস করে, দিস ক্যান ফল ইন ফরেন্সিক, দিস ক্যান ফল ইন সাইকিয়াট্রি। সো হোয়াট ইজ ডিলিউশন অফ গ্র্যান্ডিওর? हम ही राजा है। अच्छा, एनीवन फॉलोइंग जियोपॉलिटिक्स नाउ? ट्रम्प, टैरिफ, एनी आइडिया? आप सब पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो आइडिया किसको है? अच्छा नहीं है तो बस क्या बात है, आपको भी है, ठीक है ना, यू आर तो लाजमी, हाँ तुम सभी करो तुम, ठीक है, अच्छी बात, करना चाहिए, वेरी गुड। So never mind those who don't know Trump, so I cannot give the example of Trump, मतलब बनाने का नहीं। सपोज आज आपको सोचा कि आप, अच्छा सपोज महापात्र इस फ्रॉम उड़ीसा। अब महापात्र को लगा कि नहीं हम उड़ीसा का राजा है, और महापात्र एसएमसी छोड़ के कटक पहुंच गया, है ना, और बोला कोणार्क टेम्पल मेरे घर के पास है, पास ही होगा भद्रेश्वर के पास, so I will sit on the throne। So then he becomes delusional of grandiosity, और आपको घर वापस आके he start becoming like a king। अरे ये काम कर दो, CR प्रशांत इधर लेके आओ। So if suppose he starts acting like that, that will make him delusional, delusion of grandeur। Suppose
Then come to next, delusion of persecution. Again, Prashant, after giving a fantastic practical examination, Viva, Prashant now thinks every time he comes to department, he will be grilled. ठीक है? चाहे किसी के पास जाए, चाहे विकास के ऑफिस में जाए, उसको लगता है नहीं, अब हमको ग्रिल किया जाएगा. चाहे मेरे ऑफिस में नहीं, हमको ग्रिल किया जाएगा. सर के पास तो भूल ही जाओ. So that becomes delusion of persecution. Okay. Now delusion of reference. अच्छा, madam, who wants PDF? ठीक है? PPT. तो अच्छा ठीक है. अरे भाई, थोड़ा हंसी मजाक कोई बात नहीं, डोंट दिल पे मत लो. Okay. Now suppose someone is talking. I can say it or her also. कहाँ गया? The question girl. हाँ, there. Suppose কথা হচ্ছে কিছু, and you will have this. अच्छा, all of this thing आप अपने आप में पाओगे. ठीक है ना? When you will read psychiatry, every moment you read that book, echo अच्छा because then you will think that I am a psychiatric patient. अगर आप नहीं तो कोई और सही, मतलब आपके फैमिली. अगर वो नहीं तो आपके मित्र में तो कोई मिल ही जाएगा आपको. बट उनको डोंट होल्ड अकाउंटेबल, वो आपको प्रॉब्लम है पढ़ रहे हो. नाउ व्हाट इज डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस? सपोज इतना टॉक हो रहा है, आपको लग रहा है आप ही के लिए बात हो रहा है. सो दिस इज डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस. इन्फ्लुएंस, नाउ द सेम थिंग. आपको लग रहा है आपके लिए बात हो रहा है और वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू. एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, बट आप ऐसा लग रहा है. नाउ अगेन इफ शी कन्फ्रंट्स कि सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हम तो एक ही पीडीएफ लिए थे. तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बट स्टिल इफ यू थिंक कि नहीं ऐसा ही है, देन दैट बिकम्स अ डिल्यूजन. डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, शक करना. कपल में देखा जाता है, बोथ पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर शक करता है. सो दैट इज डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी. One way or the other you will all be a part of it. Now, delusion of self reproach, अपने आप को छोटा दिखाना, अपने आप को नेगेटिव समझना, ऐसा. Nihilistic also means the same thing. अपने आप को डाउट करना कि I cannot, हाँ ऐसा क्या लग रहा है हमको, शायद ऑनर्स होवे ना पावो ना. So read हो जाए. Okay. Now, if there is delusion, because it echo कुछ. If there is delusion, that means mental illness. Illusion can happen, but delusion, if there is delusion, that means mental illness. अच्छा, बिल्ली को लगा शेर है. Delusion of persecution. I actually have all the pictures, but I did not put. नहीं तो ऐसे ही 10 बज जाएगा. Now, so let us go first to rest of the things. You know what is obsession? Obsession can be of multiple things. I will keep it simple and sweet. Obsession of cleaning. ये safe है. बहुत कुछ का obsession होता है, but I will keep it to cleaning. So that is obsessive compulsive behavior. Impulse. अच्छा, एक minute. Can I have your attention, please? Those people who are discussing. Last bench. हाँ भाई, हेलो. ইম্পালস, এটা লাস্ট ইয়ার পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল. You know the senior, I will not name his name. I actually met him today. He said physics में impulse. No, ऐसा गलती मत करो. Physics ठीक है, forensic physics can also happen, but हम लोग medical doctor वाले हैं. If I ask impulse, I am asking the psychiatric impulse, not the current का impulse. ठीक है ना? This actually happened. Okay. Sudden and irresistible force compelling a person to the conscious performance of some action without motive is impulse. যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়, you will give this medical definition. পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় impulse. Okay. Now, somnambulism, sleepwalking. ঘুমোচ্ছে, ঘুমি হাঁটছে. সেমি somnolence, ঘুম থেকে উঠছে, একটু আবার
ঘুমিয়ে পড়ছে। So that is problems with sleep. This can have psychiatric বা medical legal implications. Now delirium state. Delirium can be of a chronic neurological disorders also. It can be also a psychiatric etiology. Fugue, an altered state of awareness. हम चल दिए, बहुत हो गया पढ़ाई, टाटा बाय बाय, ठीक है, सन्यास बन गया। सन्यासी फूग नहीं है, वो अलग चीज है, सबको मतलब मलिन मत करो, वैसे ही करते हैं खुद तो मत करो। तो a state of altered awareness leading to forgetfulness, part or whole of life leaves home. Amnesia, retrograde, antegrade, ठीक है। So these all can be psychiatric and neurological. Confabulation, যেটা আমরা আগে পড়লাম, the picture is বাড়িয়ে বলা, বাড়ি সারি fill in the blanks. Now hallucinations. Hallucination माने psychiatric problem. इसका इतर कुछ नहीं है। ICD-10 में सब psychiatric disease गुलो नामे आशे. So false sense of perception without any external object or stimuli. It can happen in multiple things: visual hallucinations, auditory hallucinations, tactile hallucination. कौन कौन ड्रगेर क्षेत्रे tactile hallucination है? Cocaine called as cocaine bugs. MCQ और एक है पढ़ लेना, ठीक है। So tactile hallucination, forensic perspective है cocaine bugs. Now lucid interval. अच्छा, when have you heard about lucid interval? Forensic ছাড়া পড়েছিস? Head injury. Lucid interval মানে কি? ठीक है, okay, fine, I got it. Basically, an injury happened in case of head injury. Injury happened, patient in a comatose state, suddenly patient became okay, all healthy, all good. Then again, patient comes back to that state. যদি lucid interval ke, if you think the patient is normal, okay, and you do nothing and send home, patient will die. So this is the etiology of head injury. But lucid interval can also happen in case of insanity. First, a period of insanity, followed by a normal period, then another period of insanity. Okay, same thing, but এইখানে history কি থাকবে? Insanity. Symptoms not of head injury but of insanity. After it cures, it might not die, but it will have the patient will have symptoms of insanity. So this is a lucid interval you can find in case of head injuries and both in insanity. এটা difference পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়, করে নিন। All these points I just discussed. Now coming to Mental Health Act 1987, revised in 2017. Again, I update किया था, लिया नहीं 2017. Okay, so now Mental Health Act থেকে আমরা 4-5 জিনিস জানতে পারি, but it guides us to do 4-5 things. First is criteria of administration and restrainment of insane person. এমনি পাগল বলে তুমি ধরে বেঁধে রেখে দিতে পারো না। So there are criteria. Okay. Second, as per this act, patients are designated as mentally ill person. Provides guidelines to establishment, psychiatric hospital, nursing কি করে করবে। Lastly, judiciary কেও custody, inquiry কি করে করবে, it guides. More or less, any mental health illness, it will be guided by Mental Health Act 2017 now, 2017. Apart from that, provisions of liability to meet cost, provisions of protect human rights of mentally ill person. All psychiatric diseases, mental and behavioral diseases will come under ICD-10. एक पूरा list है, if you can go after, read it, वरना psychiatrist तरफ पढ़िए. So now, insanity can be framed, right? Framed. Suppose प्रशांत को लग रहा है प्रशांत एग्जाम नहीं देगा. Okay, so प्रशांत को लग रहा है एग्जाम नहीं देगा.
तो व्हाट इज सर हम इंसेन हो गए, तो ऐसा बोलने से नहीं होगा. दैट बिकम्स ट्रू एंड फेइंड इंसैनिटी. सो ऑफ कोर्स इफ समवन इज फेकिंग इट you will know it. 2 to 3 दिन बाद that person will sleep again. Generally insane people has insomnia. They don't sleep. There won't be any history. The onset will be gradual. But कोई fabrication कर रहा है, the onset will be sudden. Suddenly that person will start behaving like an insane person. The insane persons are generally dirty because they don't know what is happening. क्या मतलब है उनकी दिन दुनिया से? But the person who is faking it, he will start becoming dirty. But एक दो दिन बाद he will be normal. Okay, so this difference you need to know. We are coming to few classifications বা definitions which we use in day-to-day term. একটা হচ্ছে moron. Sometimes few people call each other morons. Idiots is a common thing to say. है ना? Imbecile. Sometimes we use, but they actually have a different meaning. As for example, idiot. Mental age, if someone is said idiot, that person's mental age is 0 to 3 years. And IQ is 0 to 20 years. Okay? They are unable to guard themselves from common physical dangers. This constitute to idiot. But we say it in some other way. Imbecile, mental age 3 to 7 years. IQ 20, 40. Feeble-mindedness, mental age 7 to 10 years, IQ 40, 70 years. At a classification, NEET MCQ তে আসে. So, देख लेना ठीक से. We can also give IQ of idiot करके ऐसा option देके. Actually I will give this question. देखते इंटरनल में आता है कि नहीं. Okay, now psychopaths. Psychopaths are not social people. So you have seen multiple movies to know what is a psychopath, है ना? But a type of personality disorder, recurrent episode of impulse, neither insane nor mentally defective, but fails to conform into normal social norms. Henderson ने बहुत कुछ बोला है, so we will not go into that. Now, mental retardation, mild, moderate, severe, and profound. Depending on IQ, mild is the commonest one. So I am just giving you this. एगलो परीक्षा आसे बुझी MCQ थे. Not that we will ask much. ऐसा नहीं हम पूछेंगे. We will stick to insanity, sane, illusion, delusion, hallucination, maximum, tactile, and we will come to impulse. এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারি, but mainly for MCQ. Schizophrenia, split personality. Now types, psychiatry, simple, schizophrenia, catatonia, we will go into psychiatry. Paranoia, manic depressive psychosis, very important. Bipolar disorder, শুনেছিস নাম? Very important. কেন? Bipolar disorder থাকলে, when in manic stage, he is very happy. That person is like a very sweet person. कविता बोलेगा, गाना गाएगा. That is, কি বলে? Euphoric state, not manic. Euphoric state. Then when it comes to manic state, that person can actually do suicide, commit suicide. That is very important. Now, lastly, coming to the responsibility part, how do we deal with these psychiatric patients? যদি কেউ খুন করে আর বা কোনো ক্রাইম করে, সাপোজ চুরি করলো, খুন করলো, আর ক্রাইম করে বলছে যে আমি এটা করিনি, মানে ডিফেন্স ইজ সেইং, সো ক্যান দিস বি আ ডিফেন্স এগেনস্ট দ্যাট ক্রাইম? Got my question? Suppose someone does any crime and the defense is saying no, he has not done it, he was not in soundness of his mind. Can that be a defense? It can be a defense. Pagol ki kor? If you can prove him unsoundedness of mind, so in that case, that means you have to prove that that person is actually a mental patient. How do you prove? This becomes, there is a law.
McNaughton's law. Okay, now what is section IPC 84 or BNS 22 for those who are with BNS? IPC का भी पढ़ लेना 84, हालांकि it is gone. BNS 22. What does it say? Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing such offense by a reason of mental illness, মানে mental illness এর জন্য এই কাজটা করেছে, is incapable of knowing the nature of the act, জানে না কি করেছে, or that he is doing what is either wrong or contrary to the law. माने suppose किसी ने खून किया, उसको नहीं पता उसने खून किया, first he does not know he has committed a murder. Second, he does not know कि murder is a crime. पहला तो उसको पता ही नहीं वो मर्डर किया है. दूसरा, he does not know murder is a crime. अच्छा, क्राइम হয়ে গেল, মার্ডার হয়ে গেল, now he does not know कि भाई এবার তোমার শাস্তি হবে, that can be ফাঁসি. So all of those things he don't know. ওকে বোঝানো হলো তাও বুঝলো না. যদি এটা প্রুফ করা যায়, then only that person will become বা called as insane person. আর তার আলাদা ট্রিটমেন্ট, নট ফাঁসি. আচ্ছা, আমি দেখলাম স্যার ক্লাসে জিজ্ঞেস করেছিলেন and you could not answer. Difference between murder and homicide বা homicide and murder. हाँ भाई बोलो. सर ने तो पूछा था, आप आंसर दिए नहीं, घर जाकर तो पता ही होगा. What is a homicide? महाभारत खत्म होने को है, आप पूछ रहे हो कृष्णा कौन है. होमिसाइड क्या है? होमिसाइड साइड साइड की इनफेंटिसाइड तो पड़े किलिंग. होमी होमी भावा ना होमोसेपियंस. होमोसेपियंस कौन है? होमो इरेक्टस ना, होमोसेपियंस. होम ना, ऐसा भी नहीं. थैंक गॉड यू टोल्ड मी दिस. सर के बोल रहे तो और भाई. ओके, हाँ. सो होमो सेपियंस, killing of a human by another human is homicide. ঠিক আছে? হোমিসাইড কি? একটা মানুষ আর একটা মানুষকে মারছে, হোমিসাইড. হোমিসাইড আর মার্ডার কি সেম? তো হোয়াট ইজ এ মার্ডার? হ্যাঁ, টাইপস টাইপে চলে গেল. তো মার্ডার কি হোমিসাইড? ইজ মার্ডার হোমিসাইড? তো ডিফারেন্সটা কি? আচ্ছা, এগেন আই উইল গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল. একটা লোক স্কুটার করে যাচ্ছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়, গাড়িতে চালাচ্ছে. আচ্ছা আচ্ছা, আই উইল নট গিভ এক্সাম্পলস, ভেরি ব্যাড এক্সাম্পল. একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে, মারলো, মরে গেল. একটা লোক একটা লোককে মারলো, তাহলে কি সেটা মার্ডার হলো? অ্যাক্সিডেন্ট. মার্ডার তো হলো না, মানুষ মানুষকে মারলো. আরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, রাস্তায় চলে যাচ্ছে হেঁটে মানুষ, একটা লোক গাড়ি করে টোটো করে এলো, মেরে দিল, লোকটা মরে গেল. तुमको गाड़ी पसंद नहीं, টোটো মার দিই. ঠিক আছে, তাহলে একটা মানুষ একটা মানুষকে মারলো. হ্যাঁ, তো ইন্টেনশন নেই থা. ইন্টেনশন থাকতে হবে, কারণ থাকতে হবে. देयर हैज टू बी अ रीजन और इंटेंशन टू किल. मारने के लिए मारा था, ऐसा नहीं कि ক্ষতি করতে মেরেছি. তো এবার চলে আসি মার কোনটা? তো টোটো তো অ্যাক্সিডেন্টালি, তো মার্ডার হবে নাকি? টোটো রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, রোড ট্রাফিক ইনসিডেন্টস, তো সেটা কি তুমি মার্ডার বলবে? অবভিয়াসলি নট, অ্যাক্সিডেন্ট. দ্যাট ইজ হোয়াট আই এম সেইং. হিয়ার ওয়ান হিউম্যান ইজ কিলিং অ্যানাদার হিউম্যান. টোটো চালক পথযাত্রী মানে যে রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে তাকে মেরে ফেললো. ওয়ান হিউম্যান কিলিং অ্যানাদার হিউম্যান, দ্যাট ইজ হোমিসাইড, রাইট? বাট ইট ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট. ম্যানার অফ ডেথ ইজ অ্যাক্সিডেন্টাল. হ্যাঁ, কিন্তু যদি কিন্তু এটা হোমিসাইড তো রে বাবা, মানুষ মানুষকে মেরেছে. ম্যানার অফ ডেথে আমি যাচ্ছি না, বাট জিনিস অ্যাক্সিডেন্টালি হয়েছে, বাট ম্যানার ইজ নাও. যদি আরেকটা মানুষ আরেকটা মানুষকে মারে, ইন্টেনশন যদি থাকে টু কিল, আর যদি entire thing has been planned, there is intention, there is intent and intention to kill, then that will be a murder. So generally ধর সাপোজ
Uh, so there can be huge examples like that. Right? Okay. So now, so what do I have to prove in this case? In this case, I need to prove that whether the person was aware of the crime, second, whether it is a crime, second, that person can be judged or punished in that crime. যদি আমি prove করতে পারি the accused person did not have anything to do with it, then that person will be insane and সাজা or অন্য কিছু হবে. He will be sent to a mental asylum. So what happened? এটা তো law, but it is framed upon a rule that is called as M'Naghten rules. এটা কিন্তু important forensic psychiatry purpose. What does it say? Every man is to be presumed to be sane and to possess a sufficient degree of reason to be reasonable for his crime until the contrary be proved, and that to establish a defense on the ground of insanity. It must be clear that at the time of committing the act, the party accused was laboring under such a defect of reason from disease of the mind so as not to know the nature and quality of the act he was doing, or if he did not know it, that he did not know what he was doing was wrong. বোঝা গেল যেটা আমি বললাম কিছুক্ষণ আগে, যে একজন if he does not know what he is doing, if he does not know what he is doing is a crime, or if he does not know that what he is doing is a crime and it is punishable under this thing, can lead to his death also, capital punishment. যদি আমি প্রুফ করতে পারি তাহলে আমি প্রুফ করব যে দ্যাট পারসন ইজ সেন অ্যান্ড ইনসেন, আর ইনসেন প্রুফ করতে গেলে এন্টায়ার থিং ফাঁসি হবে না, একটা কোনো অ্যাসাইলামে থাকবে, তারপর বাকিটা অ্যাসাইলামে কি হবে তার দেখার জন্য তেরে নাম দেখে নাও, দেয়ার ইউ উইল নো হোয়াট হ্যাপেন্স ইন অ্যান অ্যাসাইলাম. সো নাও M'Naughten's rule is the only rule, ऐसा नहीं है. What happened? There are Durham's rule, Curran's rule, American Law Institute, ব্রোনার রুল, এই নামগুলো জানলেই হলো. ওকে, নামগুলো জেনে রাখবি আর পারলে দেখে নিবি কি কি বলছে, সেম থিং মোর অর লেস, ওয়ান থিং অর দি আদার. সো দিস আর দ্য অ্যাক্টস বিফোর M'Naghten. নাও এবার চলে আসি হাউ ইট ইজ অ্যাপ্লাইড ইন আওয়ার লিগাল সিস্টেম. তা লিগাল সিস্টেমে আমি কি কি পড়লাম, কখন কখন লাগছে আমাদের, সিভিল কেসে লাগছে. সাপোজ একটা প্রসিডিংস চলছে, প্রসিডিংসের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট বা জাজ মনে হলো যে উইটনেস যে এসছে দ্যাট পারসন ইজ নট স্টেটিং ফ্যাকচুয়াল থিংস, মানে হি হ্যাজ ডাউটস দ্যাট পারসন হ্যাজ সাম ডিগ্রি অফ মেন্টাল আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ড. তাহলে তিনি কি করবেন, মানে বেসিক্যালি আমি সারমর্মটা বলছি. হোয়াট উইল হি ডু? He will stop the proceeding. He will ask MO to examine the patient. Now MO, but doctor, examines the patient. He finds that person has some degree of mental retardation, uncertainty of mind, some degree. What he will do? He will ask a psychiatrist and a psychologist. दोनों अलग अलग है, पता है ना? Psychiatrist, doctor, psychologist, उनका भी अलग डिग्री है. द प्रॉब्लम इज साइकाट्रिस्ट डोंट स्पेंड मच टाइम विद द पेशेंट लाइक अदर डॉक्टर्स. वी कम, वी ट्रीट, वी गो, वी कम, वी कॉन्कर एंड वी गो. कॉन्कर का पता नहीं, ठीक है ना. साइकोलॉजिस्ट दे विल सिट एंड डू काउंसलिंग पार्ट एंड डू ऑल अदर टेस्ट्स इन दैट काउंसलिंग. सो देयर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर चार्ज इज ऑल्सो, ठीक है ना, चार्ज कम नहीं लेते. ओके, सो नाउ both of them will be asked to come to court कि कल को अगर आप साइकेट्रिस्ट बने आपको जाना पड़ सकता है. Okay, so they will come to court. In that court premises, while they are giving that judgment, they will see. अगर उनको लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, गया नहीं, फिर then take that person to hospital. गया नहीं, तुम नहीं गए, patient take that person, victim by accused, to hospital and then
treat the person or diagnose under a board. Heading will be head of psychiatry of a government hospital. এর আন্ডারে হলে বর্ধমান, ডিস্ট্রিক্ট, এটা তো বর্ধমানের কাছাকাছি পড়ছে, তো বর্ধমান বা রামপুরহাটও পড়তে পারে, রামপুরহাট, এটা অ্যাকচুয়ালি রামপুরহাটে যাবে। সো দিস ইজ দ্য এন্টায়ার প্রসিডিউর। দিস ইজ ফর अगेन सेक्सुअल एक्यूज्ड বা सेक्सुअल विक्टिम, स्पेसिफिकली फीमेल्स, उनके साथ ऐसा ही प्रोसीजर होता है। ओके, and once that thing is proved कि she or he is insane, then treatment will start. The day he or she is proved normal, again the trials will start. ওর মাঝখানে ট্রায়াল হবে না। আচ্ছা, ভারতে বাইরের দেশে পার্শিয়াল ইনস্যানিটি ইজ অলসো টেকেন এজ আ কেস, पार्शियल। আমাদের এখানে পার্শিয়াল কিছু হয় না, which is good one way, because अगर पार्शियल आपको प्रूफ करना है, then onus will be on the psychiatrist। अब आप समझ जाओ उसमें क्या क्या हो सकता है, and the lawyer। So here one way it is good कि we don't have any partial thing, प्रूफ करो है तो है, ऐसे ही कोई प्रूफ नहीं करेगा, there are scales। अच्छा, I don't have much interaction with psychiatry, but আমার thesis ছিল, as you might know already, accused person এর উপর, accused of POCSO crimes। তো এখানে আমি যখন পড়তে গেছিলাম, so there were 2-3 angles that were done in বাইরের ইয়েতে, USA, कि they checked violence, how violent a person can be, how impulsive a person can be, how sexually inclined a person can be। So there are scales, Vorag one के था, so multiple scales are there। So psychiatrists mainly use those scales to find out the diagnosis। ठीक है? So this is mostly all of psychiatry, forensic psychiatry, not the psychiatry subject। बहुत कुछ है। की परीक्षा जो नहीं important, definitions, illusion very important, delusion, impulse, hallucination to some extent। MCQ জন্য তো অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট, টাইপ অফ প্যারানয়া, ক্লেপ্টোমেনিয়া, ক্লেপ্টোমেনিয়া কি चोरी, पायरोमेनिया आग लगा रहा है, निम्फोमेनिया, हाँ बोलो, हाँ निम्फोमेनिया नो, हंस रहे हो तो मतलब पता है, ठीक है, बाकी लोग देख लेना, गूगल कर लेना। सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, ठीक है, कोई बात, ठीक है, अच्छी बात, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ना चाहिए, वेरी गुड। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट दिस डिल्यूजन थिंग्स, যেগুলো আমি বললাম, ডিলিউশন অফ গ্র্যান্ডিওর, অল দোজ ক্যান কাম। মেন্টাল রিটার্ডেশনের আইকিউর সঙ্গে ইডিয়েট, ইম্বেসাইল আর ফিবিলিটি অফ মাইন্ড। আমাদের জন্য ম্যাকনটনস ল, ইনস্যানিটি, इल्यूजन, डिल्यूजन, इम्पल्स, इतना ही कर लो काफी। बट रीड द एंटायर बुक, समझ लो थोड़ा बहुत। ओके, एनी क्वेश्चन? हाँ मैडम, नो क्वेश्चन टुडे? अच्छा, ठीक, ऑल गुड, ओके, ठीक है।